Start. Yeah. So, hello everyone. Welcome to this wonderful magical journey where we start living a life full of happiness. Yesterday we did our chapter Works Like Magic. इसमें हमने बात करी थी कि कैसे हम by the attitude of gratitude we can change our way of doing any kind of work और उसमें हम कैसे वो एनर्जी कैसे हम उसमें हैप्पीनेस एंड जॉयफुलनेस ला सकते हैं विद द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. So any questions about yesterday's class? Because we need to, in yesterday's assignment there was an invisible manager जिसको आप काम बताते हैं एक के बाद एक. संदीप, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर यू कि आप उसको बताते हैं कि ये देखो मेरे पास ये कार है, मेरे Yes, घर ma'am. के बाहर पार्किंग है. तो जो जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं वो लिख रहे हैं. जो जो Okay. आप महसूस कर रहे हैं वट एवर एनी स्मॉल थिंग और बिग थिंग, कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है. जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, तो आप वो बताएंगे एंड यू टेल हिम इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, और वो पॉइंट्स लिख ले. दैट इज इट. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ Yes, ma'am. remembering what all gratitudes you really have, what all blessings you have in life for which you can be grateful about. All right. Okay, so today's chapter is about magical way out of negativity. That is chapter number 7, in which there are different techniques and ways to remove those negativity from our lives. We have felt many a times that we get trapped in the negativity. और उससे बाहर आने का हमें तरीका ही नहीं मिलता. It's just like a spiral of complaints and negativity we get into. तो उससे हम कैसे आ सकते हैं? आई हैव नोटिस दैट जो बातें हम ज्यादा करते हैं, जो डिस्कशंस हम ज्यादा करते हैं दिन भर में, वी अट्रैक्ट सिमिलर सिचुएशंस इन लाइफ. इट सो हैपेंस, जैसे कहा जाता है कि जो चीज हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो चीज हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में. आई मीन दो सिमिलर सिचुएशंस वी कीप अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ. सो व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग? We need to practice to attract similar situations which we want in our life. So what you need to understand here is that suppose आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई साथ से एकदम क्रॉस करके निकलता है, जोर से गाड़ी तेज घुमा के, खूब तेज हॉर्न देके, एंड यू गेट सो चीज्ड ऑफ, और आप बोलते हो कि अरे ये ऐसे कैसे चला गया, एंड यू रिएक्ट, यू शाउट, यू स्टार्ट अब्यूजिंग. तो क्या होता है? you get into that negativity, you get into that negative feeling, और आप वही सिचुएशन बार बार लाते हैं अपनी लाइफ में, जो सिमिलर सिचुएशन, जब वैसी ही सिचुएशन जिसमें आप सेम रिएक्शंस दें, आप उसी तरीके से अब्यूजिव हो जाए, आप उसी तरीके से चीखने लग जाए, आपको वैसी वैसी सिचुएशन मिलने लग जाती हैं लाइफ में, और आप परेशान हो जाते हैं आजकल सब लोगों को हो क्या गया, सब लोग कैसा बिहेव करने लग गए, मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं लाइफ में. But actually you are attracting because you get into the negativity, you get into the social media, you connect with it a lot. सारा दिन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे you keep searching for any kind of news, चाहे वो सुशांत की हो या कोई भी हो, कोई भी फिल्म स्टार की हो, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, and you get into it and you keep posting and posting on Instagram about it, your reviews, your views, all that. तो क्या होता है कि जो आपका मेमोरी है उसमें ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया, मोर एंड मोर इन लाइफ. आपको लगता है कि ये ट्रैफिक तो लाइट हमेशा खराब ही रहती है, या यहाँ पर तो हमेशा मुझे ट्रैफिक मिलता है, ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई है, Yes, मौसम ma'am. का हाल देखो, मौसम कितना खराब. मतलब there is so much to talk about, and it is no doubt there are challenges, there are such situations in life. You're not saying anything which is not happening, you are saying what is really happening. But what I am trying to say
कि उसको बार बार बोलने से वो आपके माइंड में रजिस्टर हो रहा है और यू आर क्रिएटिंग सच सिचुएशन जो वो आप उसको और अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आप जो चीज मांगते हैं वही चीज आप पाते हैं, यू बिलीव इन इट, और फिर वो आपको मिलने लग जाती है। You ask for it, you believe in it, and you act upon it by your thoughts, by your feelings, by your actions, and then you start receiving it. That is law of attraction. And it is the law of universe. Just like there is law of gravitation, there is law of universe, which is law of attraction. तो ये सब चीज होती है और हम महसूस करते हैं वो चीजों को। लाइक yesterday मेरा आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरा लैपटॉप जो है उसमें ये कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो मुझे वो ठीक कराना है, और आज सुबह मेरा लैपटॉप जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग। आई समहाउ अट्रैक्टेड इट, तो फिर वो खैर इट गॉट डन and everything, and I'm having the call here, and I thanked my laptop. I thanked the person who corrected it. I thanked my son who got it done. So it's like this. You attract different situations in life, big or small, good or bad. So you have to be victorious and come out of these defeats. आपको उसमें से बाहर आना है, इस challenges में से लाइफ में आपको वही situation को कैसे पॉजिटिव करना है, that you have to do, because your thoughts shape your mind, and mind has two parts as we discussed, subconscious mind and conscious mind. तो जो चीजें हम ज्यादा महसूस करते हैं, देखते हैं, जैसे हम खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं और उसमें हम कुछ हॉरर मूवी देख रहे हैं, या हम कोई भी चैनल देख रहे हैं, तो वो तो दिखाएंगे, मीडिया तो दिखाता ही है सब, बट आप जो रजिस्टर कर रहे हैं आप माइंड में, वही बार बार आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उसको बार बार अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर थॉट्स. So you need to understand that you have to be in the good feeling zone and not in the bad feeling. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए to be in the good feeling zone. So we can start with a very beautiful video I have on rice experiment, which shows that how you can be in the good feeling zone. Most of the times we are in bad feeling zone. क्या होता है कि राइस एक्सपेरिमेंट में वाटर ट्रीटमेंट दिखाते हैं. वाटर ट्रीटमेंट, आई मीन टू से कि वाटर हैज प्रोग्रामिंग मॉलिक्यूल्स एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. जैसे ऋषि मुनि हाथ में पानी लेके संकल्प करते, कुछ भी कर देते थे, बिकॉज वाटर हैज इमेंस पावर. वाटर इज ऑल्सो सिंबल ऑफ अबंडेंस. तो जब हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं अपने माइंड को, कुछ भी खाते समय या कुछ भी पीते समय या जो भी हम सोचते हैं, वो सब हमारे माइंड में प्रोग्राम होके हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है. दैट इज शोन बाय द राइस एक्सपेरिमेंट. डॉक्टर मकाओ, he experimented that by keeping boiled rice in 2 jars. I will just show you also. And उसमें उन्होंने थोड़ा सा पानी डालते, थोड़ा थोड़ा पानी डालते, और एक जार के ऊपर वो एक पेपर से लिख देते हैं आई हेट यू, और एक जार पे वो पेपर से लिखते हैं आई लव यू. और जिस पे लिखते हैं आई लव यू उसको बार बार बोलते हैं यू आर सो नाइस, यू आर सो अमेजिंग, वाओ. मतलब उसको बार बार ऐसे बोलिए, पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, आई रियली लाइक यू, आई रियली रियली लव यू. और जो हेट वाला जार है उसको आप ये बोलिए कि आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू. जो भी आपको जिससे भी कुछ है प्रॉब्लम, आप वो ही सारा उसको बोल दीजिए. सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर 21 days इट वाज विजिबल कि जिस जार में ये बोला गया आई लव यू, वो तो बिल्कुल वैसा ही है, बस जिस जार में ये बोला गया दैट आई हेट यू, उसमें फंगस लग जाता है. इट इज प्रूवन. यू कैन ऑल्सो डू दैट. इट्स अ 21 days experiment. बिकॉज 21 days आपको दिया जाता है कुछ भी थ्योरी करने के लिए, कुछ भी ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. 21 days is for the practice and 90 days is to create your lifestyle.
It's a proven fact. So I will just share with you. It seems so unbelievable, you know. It is real, Dr. Masao ki ye Yeah, but look at it, experiment. no. Yeah, It but looks so unbelievable कि ऐसा भी होता है, you know. it is the impossible rice experiment. It is called, and I did it myself. Yeah. Yes. How come, like, Seriously, you ma'am. know, both the rice were in a container and they didn't spoil? This is the magic. This is the magic. जस्ट इमेजिन हमारे मैं वही हमारे कह अंदर रही हूँ कितना यार. फंगस होता होगा अगर जब हम कुछ Hmm. भी ऐसे फीलिंग्स डालते हैं. Hmm. So we need to be very careful how we feel, how we think. Okay, so now we can start our. There is also another example. I'll be sharing more examples while we read. Let us start reading. And who will read? Yeah. Day 7, the Mm, magical way out of negativity. ma'am, may I read Yes, Sandeep, please. the magical? Magical way out of negativity. A, a thankful person is thankful under all circumstances, whether it's relationship in Sorry, turmoil, this is written by Baha'u'llah, Persian Baha'u'llah. founder of the Baha'i Temple. Yes. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing. So much taking things for granted always leads to our life decreasing. Are you great? Sorry. Yeah. Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time or you receive it, or do you take it your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are some problems? Are you grateful when your car is working well, or do you think of your car when it breaks down? Okay. Are, So what she's trying to say कि वो जो situations आपकी life में आती हैं, just check your thoughts. कि whatever situations you are facing in life, उस time पे आपका क्या reaction होता है? Are you able to handle them and transform them by the power of gratitude? या बिल्कुल ही आपका breakdown हो जाता है? क्योंकि क्या होता है अक्सर जब हम लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आती है, बिकॉज चैलेंजेस कीप कमिंग, Hmm. लाइफ इज लाइक दैट. तो जब चैलेंजेस आती हैं लाइफ में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट. And if we are able to handle it, we can really work on the solution rather than working on the problem. How is it possible? क्योंकि हम क्या करते हैं, we focus on the problem कि जो नहीं है, जो जो सपोज हमारा किसी से रिलेशन ठीक नहीं है, सो वी फोकस ऑन क्या नहीं है, रादर वी problems? नीड टू फोकस ऑन द बेटर पार्ट, उसमें क्या अच्छाई है. और अदरवाइज अगर वो रिलेशन ठीक नहीं है, तो बाकी जो 99 रिलेशन जो ठीक हैं जिनके साथ, वी नीड टू फोकस ऑन दोज रिलेशंस rather than this one relation and keep, brooding about it in your thoughts. Okay? Yes, ma'am. Yes, please. Are you grateful to be alive each day?
or do you take your life for granted? Take things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dreams life further away with every complaint. या सो जैसे भी मैंने बताया, छोटी छोटी बातों पे जब आप कंप्लेन करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे, तो क्या होता है, प्रॉब्लम तो है, हर चीज में बुराई भी अच्छाई भी है. इट सो हैपेंस कि वो आपको बुराई ज्यादा दिखने लग जाती है और अच्छाई आपको ढूंढनी पड़ती है फिर. सो यू रियली हैव टू डिग इन दैट, जस्ट लाइक अ ट्रेजर हंट यू हैव टू डू ईच डे. क्योंकि आप कहीं बिल जमा करने जाएंगे तो लाइन भी लगेगी, कहीं पर कॉस्ट कटिंग भी होगी, कहीं पे किसी से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा. So you have to find out the ways to find out solution to that. And what is that solution? Sometimes, out of my experience, I have seen that when you start giving gratitude, क्या होता है कि या तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो जाती है, या फिर आपको वो कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई solution, some positivity you start finding in your own life for which you can look up to. Yes, please. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. Yeah. It's impossible to feel sad or have any negative feelings when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long time period of time to transfer them with the gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke just like a magic. Yeah. So like कोई भी negative situation आती है. Remember I saw the movie तारे ज़मीं पर. So Very उसमें nice movie. you all must have watched it. उसमें there was Yes, a ma'am. boy. I just remember his name, Darshil. So Darshil. yeah. So उसको क्या था? He had some kind of concern with, he couldn't just understand whatever the teacher was saying. तो उसके टीचर्स उसको खूब मजाक उड़ाते थे, घर पर भी. फादर वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग एवरी टाइम, मदर वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग. सो व्हाट हैपेंड, दैट बॉय वाज गेटिंग डाउन, लो 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 इन हिज इमोशन. वो इतना ज्यादा नेगेटिव फील करने लग गया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था किसी बारे में भी, क्योंकि कोई भी जो भी आ रहा था उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के जा रहा था. Till the time he found a teacher in his life. And that teacher, he transformed his life just like magic. It was a miracle that happened in his life because he found out the best thing in him, and that was how he could paint. And he could paint beautifully. So, that is a wonderful example which we can relate to this chapter. कि कैसे जब आप किसी अपने अंदर ही, आज जब आप कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं तो आपको बहुत सारी दिखेंगी, क्योंकि दुनिया तो बोलती रहेगी तुम्हें ये अच्छाई नहीं है, तुम्हें तो ये बुराई है, तुम तो ये नहीं करते. बट यू हैव टू फाइंड दैट पॉजिटिव थिंग इन यू एंड कम आउट ऑफ इट लाइक अ विनर. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ विनर? द विनर इज वन who is able to change negativity into positivity, defeat into success. Yes, ma'am. Yes, please. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about,
especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let's us rise, let's let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't lie. So tell us all be." Let us all be. Let us all be. Yeah. तो लॉर्ड बुद्धा ने भी यही बोला है कि हम राइज करें, कि हम एटलीस्ट हम जिंदा हैं, हम कर सकते हैं. वंस यू आर अलाइव यू कैन डू एवरीथिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं. यू हैव दैट इमेंस पोटेंशियल इन यू टू गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, to achieve to the maximum, because you have to be the highest version of yourself. Always think that you are the highest version of yourself. And a beautiful example is given here by Walt Disney's movie Pollyanna. It's a movie in which there's a girl who lost her parents, but कैसे वो अपनी आंट के साथ रहने आती है, और फिर उसकी आंट जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है उसके साथ, but then she molds each and every person in the house. She transforms their life also, because when, how can you be happy? You can be happy when you make others happy. You can be happy when you find things to be happy for. तो वो एक गेम खेलती है, ग्लैड गेम, हर एक के साथ. तो जहां जहां पे कोई परेशान होता है या कुछ होता है, उनके साथ वो ग्लैड गेम खेलती है. ग्लैड इज अ वर्ड विच मीन्स टू बी हैप्पी. और Yes, कोई ma'am. आप वर्ड बताना चाहते हैं टू अनदर वर्ड फॉर बीइंग हैप्पी? Anyone, you can write in the chat box, or you can unmute and speak. Happy, glad, joyful. और बताइए कुछ words. Mm, I'm feeling happy, I'm feeling joyful, I'm feeling Elated. elated, wow, I'm feeling awesome. Say, come on, say more words. awesome. Cheer. Cheerful, very good. I'm feeling so cheerful. और बताइए. Astonishing. Astonishing, okay. I'm feeling fabulous, I'm feeling good, I'm feeling And there are so many words. I'm feeling fantastic. So we just brushing up with all the words. Okay. Just 1 minute. Thankful. Yes, Sandeep, thankful. Okay, thankful. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem, negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples what you might say. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and I am experienced. I am truly grateful that this is the first time have been unemployed.
I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and going for interviews. I am grateful that I have my health that I can work. I oh, I Yeah. am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a new job means to me. I had never realized that until now. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जिनके पास अभी आजकल जो सिचुएशन भी है और कुछ के पास किसी किसी के पास जॉब नहीं है Unemployed. या जो घर पे बैठे हैं, they are searching for something. So for them this is an opportunity to be grateful for in these many ways जो इसमें बताया कि आपको टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ बैठने का, आप वैल्यू कर पा रहे हैं वो जो आपकी जॉब थी पहले, आपको जो रेस्ट चाहिए था लाइफ में वो मिल पा रहा है, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद योरसेल्फ. So there are different ways of being grateful rather than all the time cursing कि job नहीं है, job नहीं है, job नहीं है. So you will not get what you really want. So these are the ways which is showed here how you can write and create a new life. So इससे क्या होगा, ये जो जब आप इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी सिचुएशन, कोई भी अभी इस टाइम पे जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जॉब का लिखा है, आप कोई अगर रिलेशनशिप में कर रहे हैं या किसी और सिचुएशन में कर रहे हैं, तो उस कंसर्न को सोचते हुए आप वो उसमें क्या पॉजिटिव लिख सकते हो वो लिखो, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पॉसिबिलिटी. ऐसे लिखने से क्या होगा कि नई पॉसिबिलिटी आपके आगे आएंगी. यस प्लीज. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Okay, 1 minute. So ऐसा माना जाता है that sons don't have good relation with their father. It is always observed. So if there is a problem with the son and the father, then these are the ways to be grateful for. Yes, please. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. And I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father, and for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. Yeah, how beautifully expressed. Yes, मतलब ma'am. जिनका रिलेशन अपने फादर के साथ अच्छा नहीं है, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बिटवीन सन एंड द फादर. तो वो ये सोचे कि उनके फादर ने उनके लिए क्या क्या करा बचपन से लेकर अब तक, एंड ही इज थैंकिंग दैट ही हैज अ फादर, because some people don't have. So these are different ways of expressing your gratitude towards what you have, because relationships are really very important in life, and once we lose them, we
realize the importance of the relationship. Yes, please. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, this which immediately changes what he attracts for his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude. By the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Okay, so by law of attraction is it received? How it is received? Can anyone explain कि कैसे ही law of attraction से ये हो जाता है possible? Because this talks about law of attraction. आप वो vibration भेज रहे हैं universe में. As I said earlier, जब आप gratitude show करते हैं, so see the thing is you are when you are in a complaint mode, you are feeling that complaint. जब आप सोशल मीडिया डिस्कस कर रहे हो तो यू आर फीलिंग अरे उसके साथ क्या हुआ, तो यू फील दैट, यू गेट इनटू दैट मोड. बट व्हेन यू फाइंड अ सॉल्यूशन, and when you find a solution you start thinking about the solution, you get the feel of it, and that feeling creates the vibration. So this is the logic. तो क्या करना है आपको, अपना जो फीलिंग है, आपको अपनी फीलिंग को कंप्लेंट्स में और नेगेटिविटी में नहीं डाल के आपको अपनी फीलिंग्स को सोल्यूशन में डालनी है, पॉजिटिव में डालना है कि क्या हो सकता है उसके लिए, कैसा हो रहा है. यू कैन इमेजिन, you can just fake it till you make it to get the result you want. और इसके भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, and it really happens to many. It all depends on your manifestation and your power of manifestation. Yes, please. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. When making your written list, make sure you list each of the 10 things you are for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude magical power if you find it easier. I am so glad that Okay, so you write like this: I'm so glad that my relation with my father is improving and I'm enjoying a laugh with him. I mean, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं. I'm so glad that I have found my job. I'm so glad that I have passed in my exams with amazing result. जो भी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ये डिफरेंट वर्ड लिख सकते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो ग्लैड. स्टार्ट प्लेइंग द ग्लैड गेम विद योरसेल्फ. तो आप क्या करेंगे, आप ग्लैड गेम करिए, अपने साथ खेलिए. और जो नेगेटिविटी है, जो सिचुएशन में आपको कुछ लग रहा है, जहाँ पे कंसर्न्स हैं, उनको आप मत सोचिए. उनके बारे में आप अभी उनको साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए. यस प्लीज. once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it. One minute.
through one day. There's an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I'm really grateful for dash." Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situations appear in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. यस, थैंक यू सो मच संदीप. अभी प्रैक्टिस पढ़ेंगे 2 मिनट. सो Yes. आपको कैसे करना है कि जब आप वो अपना ग्रैटिट्यूड लिखेंगे फॉर द थिंग विच यू हैव कंसर्न, द मेजर कंसर्न, तो उसमें आप 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखकर, और उसके बाद अगर कभी लाइफ में आपको लगता है कि आपको कुछ फिर से नेगेटिविटी आ रही है मन में, तो जैसे ही वो नेगेटिविटी आए तो आप बोलिए नहीं नहीं, पर मुझे लगता है कि ये भी बात है, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि वो ऐसे भी ठीक है. सो फाइंड दैट गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड टू से दैट. तो उसको वो आप, जैसे हम बोलते हैं एक आप कंप्लेन करते हैं तो 10 बोलिए, उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं इमीडिएटली. जस्ट यूज दिस सेंटेंस, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस पॉजिटिविटी विच आई फील इन दिस पर्सन. और द पॉजिटिविटी जो आप बताई, सब 10 बातें आप जॉब के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिबिंग पोजीशन में आ जाते हैं अपनी जॉब के लिए, तो बोलो नहीं, पर ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपनी जॉब आराम से ढूंढ सकूं. मगर ये भी अच्छा है कि मुझे उसमें टाइम भी मिल रहा है कि मैं अपने लिए कुछ समय निकाल सकूं, मैं कुछ अपनी हॉबीज कर सकूं. मतलब आप उसको ऐसे भी बोलिए. और जब आप वो 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखें जो आपका मेन कंसर्न है, उसके बाद आप लिखिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. मतलब आपको वो सोल्यूशन मिल गया जो आप चाहते थे. So now you are working for the perfect solution. Now you are working for the outcome. Yes, please. The magical way out of negativity. Practice number 7. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful for. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Choose one problem or negative solution in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, "But I have to say that I am really grateful for dash." Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you for reading so wonderfully, Sandeep. It's a long chapter. It's a very long chapter. Thank you. So, first thing is that you have to watch a movie, Pollyanna. Please write all that what you have to do. Second is you have to count your blessings 10 times for what you are grateful for. Third is one situation where you feel the maximum problem or negativity. तो वो कोई सिचुएशन जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, उस सिचुएशन को आप ढूंढिए, उस सिचुएशन को आप देखिए, और उसको देखते हुए आप लिखिए कि क्या वो 10 चीजें जिसके लिए आप उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं. कुछ आप उस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिविटी देख सकते हैं. आप वो 10 चीजें लिखिए. और कभी भी आपको जैसे कुछ लगता है लाइफ में कि आप कुछ नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, कंप्लेन मोड में आ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज से बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. मगर मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, मगर मुझे लगता है कि उसमें ये भी
सही है, मगर ये चीज ऐसे भी हो सकती है. इट्स लाइक दिस. और जब आप वो 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए, तो उसके बाद में लास्ट में 10 पॉइंट लिखने के बाद, लास्ट में हर एक के बाद में आप लास्ट में लिखें थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मतलब आपने उसका, आपको उसका Solution. उपाय, उसका कुछ ना कुछ रिजॉल्व हो गया, वो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, उसका कुछ उपाय मिल गया, तोड़ मिल गया. And just before you sleep tonight, you hold your magic rock and think of the best situation that happened today. So there are few assignments to be done today. And any questions regarding this chapter, anything we want to ask, please go ahead. Anything you want to add on to, or yeah, write in the chat box. I can chat box. There are so many, but I created this cause by combining 2-3 root words. Okay. ये तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, आरुष. Good. I love the way you explain everything. Thank you so much. Thank you, Manisha. Thank you. Yes. Okay. So anything else you want to ask, or we can conclude today's class? I have a video also to share. Let me see. Even in the midst of the greatest difficulties you will experience in life, you can always find things for which you are truly grateful. Hello, I'm Brian Tracy, and today I want to talk to you about gratitude and its effects on your overall life and happiness. There's a natural tendency in this world, especially if you grew up in an environment where people complain a lot, to think adults complain a lot. It's amazing how many conversations then become pity. You have something to say that I want to thank you for this effort of loving and healing each one of us by taking us towards this direction of gratitude. Thank you, thank you, thank you. And this is truly from the core of me. Thank you so much, Taran. Thank you. Thank you for being here. Because I really want to touch each one of your hearts and feel it, what really is the magic around us, and understand that there is a lot of power and potential within us which we can create in our lives. We all can do it. So, and it is, we all can support each other in this group. It's just like a family here that we are. Yes. Thank you so much for your support. Thank you for being here. I really appreciate you all. Thank For you being here. so much for all your efforts, for bringing us together and making so much efforts so that we are benefited. I Thank really you enjoy. so much.